नमस्कार आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नामे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया करके वीडियो को शेयर और लाइक करें। ओम सच्ची जनवाणी नामे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर द वीडियो टू प्रोपोगेट आवर व्यूज, न्यूज एंड issues to all sections of retirees, all sections of societies, all sections of political parties and public at large, and political parties and government, so as they may see on social media the views and issues and the news of retirees, or to motivate our friends retirees और आंदोलित रहें ताकि धरना प्रदर्शन वगैरह में भी आएँ। और सभी लोग जो है, जो ईमेल और ऑनलाइन हमारा अभियान चलता रहता है, सभी लोगों का गवर्नमेंट को जागृत करने का और आईबी और डीएफएस को जागृत करने का, उसमें शामिल होते रहें। इसलिए ये आपको मेरा निवेदन है। और मैं आपको अभी एक प्रतिक्रिया सुनाई थी अंग्रेजी में, जे.एन. शुक्ला जी ने लिखा था उसको, और मैं अभी ये हिंदी में इसलिए सुना रहा हूँ कि बहुत से साथी लोग कहते हैं हिंदी में ज़रूर कहा करो, सुना करो, तो वो हर चीज़ संभव नहीं होती। ये मेरे पास अवेलेबल था तो मैं ये सुना रहा हूँ। फटाफट मैं आपको ये पहले सुना दूँ, आगे उसके बताऊँगा। 31/10/2022 तक सभी पेंशनर्स के पेंशन के साथ मासिक अनुग्रह राशि के लिए 7/12/2023 को आईबीए का प्रस्ताव और उस पर आपकी सहमति को आरबीआई लाइन पर पेंशन अपडेशन के अंतिम लक्ष्य के प्रस्तावना के रूप में लिया जाता है। आप सभी का मुंह बंद हो गया है। पीड़ा में एक ने कहा कि अंतरिम राहत है, हालांकि आईबीए के इस प्रस्ताव और आपकी सहमति को लेकर पेंशनर्स के मन में गुस्से के साथ साथ कई गलतफहमियां भी हैं, जिन्हें निम्नानुसार आपके संज्ञान में लाया जाना है। फिर हारिए नंबर 1 अनुग्रह राशि के संबंध में लिखा है कि यह 12वें समझौते और 9वें संयुक्त नोट की अवधि यानी कि 11/22 से 31/10/2027 तक के लिए होगी। प्रभावी तिथि के बारे में अधिक शब्दावली बेहतर होती। हालांकि पेंशनर्स का मानना है कि अनुग्रह राशि समझौते की प्रभावी तिथि यानी 1/11/2022 से होगी। हमारा भी मानना है कि यही सही कथन है। नंबर 2, इसमें एक्स-ग्रेशिया राशि का कोई जिक्र नहीं है, जिसे लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। पेंशन अपडेशन की मांग को निपटान का रोड मैप और टाइम टेबल क्या होगा, इसे लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, यानी कि कितने दिन महीने में पेंशन अपडेशन तय होगा। नंबर 3, यदि अनुग्रह राशि एक अंतिम राहत है तो इसका निहित अर्थ पेंशन अद्यतनीकरण समझौते के लिए लंबित एक तदर्थ उपाय है। यदि हाँ, तो इसका स्थायी समाधान कब होगा? बैंक पेंशनरों को संदेह कि अनुग्रह राशि की इस अंतरिम राहत की आड़ में कहीं पेंशन अपडेशन को अनिश्चित काल के लिए रोकने की चाल न हो। नंबर 4, आरबीआई लाइन पर पेंशन संशोधन पर आपकी चुप्पी रहस्यमय और आश्चर्यजनक है और बैंक पेंशन योजना अपने तौर तरीकों के संदर्भ में आरबीआई पेंशन योजना से बंधी है। पेंशन समझौते के पक्षकार अर्थात आईबीए और यूनियन इस संबंध में अपनी प्रतिबद्ध और सहमत स्थिति रखते हैं। आप इससे अलग कैसे हो सकते हैं? यह सवाल बैंक कर्मचारियों को हैरान कर रहा है। आपकी चुप्पी, रहस्यमय चुप्पी आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। साथियों, ये यूएफबीओ के लीडर्स के लिए लिखा है इन्होंने। यूएफबीओ के लीडर्स को संबोधित कर रहे हैं बैंक रिटायरीज की तरफ से। नंबर 5, आरबीआई लाइन से हटना आत्मघाती होगा और बैंक में पेंशन स्कीम, आरबीआई पेंशन स्कीम की पीठ पर चढ़कर आई और यह हमारी पेंशन स्कीम की आधारशिला है। और यह बैंक प्रमुख यूनियनों ने कई मौकों पर खुले तौर पर आरबीआई लाइन के विचलन दिखाया और आरबीआई लाइन का अद्यतन के बजाय सुधार की बात की है। केवल छोटी यूनियन ने आरबीआई की लाइन पर चलने के लिए स्पष्ट रूप अपनाया और सुधार स्पष्ट और संदिग्ध है, जो एआईबीए की पहल है। आईबोक, एआईबीए और एनसीबी तीनों बड़े संगठन एआईबीए लाइन का समर्थन करते दिखते हैं और पेंशनरों की गहरी चिंता का विषय है। वे इससे बाज आए। आरबीआई लाइन पर अपडेशन एकमात्र सही रास्ता है जो पेंशनरों को स्वीकार्य है। हम आशा करते हैं कि आपके उपरोक्त गलतफहमियों को और संदेहों को गंभीरता से और पेंशनरों के साथ आगे रहने वाले अन्याय और गलतियों को रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करेंगे। हालांकि आपकी विश्वसनीयता रसातल में चली गई, फिर भी हम आपको कुछ सही करके सुधारने का मौका देते हैं। ये सभी रिटायरी साथियों की तरफ से। और हमने बीएमएस के केंद्रीय कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो है दिल्ली में बीएमएस का, वहाँ भी ये बातें रखी थी। मिस्टर मनमोहन दास हैं जो जनरल सेक्रेटरी एनओबीडब्ल्यू के, और बाद में गिरीश आर्य जी जो उनके फाइनेंशियल सेक्टर को देखने वाले हेड हैं और राष्ट्रीय मंत्री हैं बीएमएस के। तो ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है, ये तस्वीरें हैं, तो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, गिरीश आर्य जी को इन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है, अपना क्या नाम है, शुक्ला जी ने,
और जनरल सेक्रेटरी NOBW और नोबो वालों को भी लिखी। और इन्होंने कहा जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 21 जनवरी से, उसमें आप वो करें, शिरकत करें और चीफ गेस्ट बने। एक तो इन्होंने ये लिखा, और तमाम इन्होंने डिटेल्स दी हैं कि भाई आपने फैमिली पेंशन कराई, DA मर्जर का फार्मूला कराया और रिजाइनीज को पेंशन दिलवाने का करा, तो आप इसे पेंशन अपडेशन को भी कराइए। हमने भी यही मांग रखी थी इनके सामने, और इन्होंने कहा भी था हमें, देखो फाइनेंस मिनिस्टर का टाइम भी मांगा है हमने, मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। तो ये चीज़ें, और ये चिट्ठी मैं पहले आपको बता चुका हूँ इस चिट्ठी के बारे में। तो अच्छा, एक लेटर भी इन्होंने बनाया था और नोटिस से संबंधित, ये नोटिस का भी ये लेटर मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पहले इसके बारे में, इसकी प्रस्तावना की तरह से JN शुक्ला जी ने भेजा, और सभी को भेजना है, ये मैं भी भेजूँगा। तो इन्होंने लिखा, ऑल एक्टिविस्ट पेंशनर्स, वी इन्वाइट योर अटेंशन टू फॉलोइंग 2 important tasks we assign to you. Number 1, if you have not already sent, please send a letter cum notice to your MD and CEO with a copy to the Secretary DFS New Delhi by registered post. A copy of the letter along with the original registry receipt should be sent to AIBRWA at its correspondent address, Sri R.S. Sharma, 3356 ग्राउंड फ्लोर, आर्यपुरा, सब्जी मंडी, दिल्ली 110007. The draft notice is again attached for your quick reference. Number 2, all NCR Delhi based pensioners as well as those pensioners residing in other nearby cities, pensioners and pension optees who are in receipt of special allowance and are still in service are required to join the dharna on 21 January 2024, Sunday at Jantar Mantar, New Delhi. You should start mobilizing them. The dharna will take place between 11 a.m. to 3 p.m. We expect record participation in the dharna, which will be possible only when the pensioners of these stations dedicate one day for general welfare of the bank pensioners of the country. We are very excited about the success of the dharna. Its objective is to draw the attention of the government to plight of the pensioners. We are not at all satisfied with the adhocism of interim relief. We want pension updation on RBI lines in stipulated time. All pensioners should rise above their organizational affiliations and political beliefs and join the dharna. JN शुक्ला। और हम भी ये अपील आपसे करते हैं। और अब मैं आपको वो लेटर भी बता देता हूँ जो ड्राफ्ट नोटिस सर्कुलेटेड बाई IBRWA न्यू दिल्ली ने इन्होंने बनाया। ये शुक्ला जी ने ही बनाया मुख्य रूप से। फ्रॉम अपना नाम पता वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, है ना। डेट है दिसंबर 2023, मतलब डेट भर लेना इसमें। द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, एड्रेस वगैरह सब, जिसका भी हेड ऑफिस जहाँ है बैंक को भेजना है। डियर सर, रिगार्डिंग अपडेशन ऑफ माई पेंशन। अब मैं इसको आप फटाफट से बता देता हूँ आपको, और सर्कुलेट कर रखा है हमने सभी जगह, लेकिन फिर भी एक बार। आई एम पेंशन ऑफ योर बैंक, रिटायर्ड ऑन डेटेड इतने, एंड गोट पेंशन फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ पेंशन सेटलमेंट डेटेड 29 October 1993, एग्रीमेंट एंड पेंशन रेगुलेशन 1995, रेगुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट drawn 10 months average pay on my superannuation. It is revealed from the memorandum of understanding MOU dated 7th December 2023 entered into between IB and constituents unions of UFB. The MOU in which says, among other things, the provision for payment of the ex-gratia amount to all pensioners on roll on 31st October 2022 for periods of 12 bipartite settlement, and 9th joint note, that is from 1st November 22 to 31st October 27, both days inclusive. Since your bank is member of IBA and IBA acts upon the mandates of member banks, it is understood that the said provision of ex-gratia amount payment is inserted in MOU on your mandate. In this regard, I have to keep you informed and notified with the following. नंबर 1, इसमें करीबन इन्होंने पॉइंट लिए हैं, करीबन 10 पॉइंट नहीं 12 पॉइंट लिए हैं इसमें, है ना। 12 पॉइंट हैं,
12 पॉइंट है, मैं फटाफट इनको आपको सुना देता हूँ एक बार। पहला नंबर 1 पॉइंट, that at the outset I record my strong protest and indignation against your mandate for ex-gratia amount payment and for not updation of relatively to wage revision done in the bank after my retirement. This way you deprived me my right to revise pension due to from wage revision after my retirement. Number 2, that the provision to make ex-gratia amount payment cannot be substituted to my statutory right of pension updation. There is no such provision as ex-gratia amount payment, neither in agreement nor in regulation in force. Number 3, that it is your malicious demeanor to usurp, deny my right flowing from the said agreement and regulation to get pension updation on RBI line. Number 4, that the word ex-gratia amount finds no place either in pension settlement dated 29 October 1993 under ID Act 1947 and in BEPR 1995 under Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970 and 1980. Provisions to make ex-gratia amount payment in place of the pension updation is ill-intentioned attempt to forbid and obstruct the legitimate benefits flowing out from the aforesaid legal instruments regulating payment of the pension. Number 5, that the said route you choose in collusion with your association IBA to escape from the obligation that cast in you in terms of the agreement and regulations. Through this unlawful modus operandi, you want to evade from your contractual obligation that are envisaged in said agreement and regulations in the force. Number 7, that habitually you have been evading pension updation in inbuilt provision in the agreement and regulations in relation to the 6th and 11th wage revision. Under the inbuilt provision, one-time pension revision was done in relation to the 5th bipartite settlement. Therefore, you have been doing wage revisions but surpassing, sidelining the pension revision. This way you have unlawfully usurped crores and crores of the rupees of pension amount due to the pensioners had pension been revised with wages. 7th, that though we know you know very well the inbuilt provision of the pension updation clause, the clause 35(1) of BEPR 1995 was used to update the pension from 1st January 1996 to 31st October 1987 relative to 5th wage revision, which come in force from 1st November 1987. This clause still exists in BEPR 1995, duly amended in 2003 as under Regulation 35 Basic Pension and Additional Pension, wherever applicable shall be updated as per the formula given in Appendix 1. 8th, that you are well aware that the pension agreement and BEPR 1995 and the replica of RBI pension agreement and regulations, we believe you are aware of terms and conditions in para 6 and 12 of the agreement dated on this 10/1993 to apprise you instantly. I quote below para 12 of settlement 29 October 1993. Inverted comma start dash applicable qualifying service, amount of pension, payment of pension, commutation of pension, family pension, updating and other general conditions, etc. on the lines of as are in RBI 9th. That in addition to what is envisaged in the agreement in the meeting of small committee held on 26 March 1994 to finalize the draft of regulation, it transpired as below. Inverted commas formula for updating provisions should be in RBI line of the same given in RBI scheme. Any change therein should be introduced only after the mutual agreement. 10th, that on 10th November 1997 a meeting was convened to trace out the
imbroglio arisen under clause 22(4)(b) of BEPR 1995. Forfeiture of service in event of strike. See below that transpired between IBA and unions with inverted commas. Withdrawal of strike clause in pension scheme. The unions asserted that the pension settlement in banks was arrived at exactly on the premises that it will be exactly on the line of RBI pension scheme. This is the bedrock of pension scheme, since in RBI pension scheme this clause does not exist. There is no case for it to be in the pension regulation. IBA agreed with this view and will therefore recommend to government for its deletion. 11th, that according to the para 7 supra pension updation is an inbuilt provision adhered to from day one and is still in force. Para 8 speaks about the terms agreement covering various terms and conditions including updation on RBI lines. These admitted positions have had been reiterated in a small committee meeting held on 24 March 1994 for finalizing the draft of the regulation, and in meeting held on 10th November 1997 in forfeiture of the service in event of strike, reaffirmed the position of RBI pension scheme as bedrock of our pension scheme. 12th number, that in past, in addition to no pension updation, many decisions have had been taken which are detrimental to the interest of the pensioners. In view of the submissions made as above, I call upon you to please desist from imposing the unilateral decision of ex-gratia and ex-gratia amount of payment. It's not substitute to the pension updation to which I am entitled within the meaning of pension agreement and BEPR 1995, which is your contractual obligation to which you are bound to fulfill. Please take this as an demand notice to please update my pension on RBI line within a period of 2 months from the date of this notice, following which I shall be forced to take legal recourse at your cost and responsibilities. Regards, अपना नाम लिखना है. कॉपी टू द सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001 फॉर नेसेसरी एक्शन प्लीज. तो ये था इसमें इसका जो आपको बताया है नोटिस, जो नोटिस था ये देना है और फिर आगे की कार्रवाई जैसी होगी बताई जाएगी, जो भी डिटेल्स आएंगी. साथियों नमन, धन्यवाद, सल्यूट, क्रांतिकारी और अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स को, बैंक पेंशन एक्टिविस्ट साथियों को. संपन्न सभी लोग संपन्न रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सभी से परिवार मंगलमय रहें. भारत माता की जय. वंदे मातरम. जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति. ओम ब्रह्मा विष्णु नमः, ओम नमः शिवाय. जय हो. धन्यवाद. आर के त्यागी का जवाब. थैंक्स.